Hello, everybody. Hi. I hope all of you are doing absolutely fine during this lockdown period. Cool. I think we have enough people who've joined us today for the basics of script writing pro tip workshop today. And I'm really excited. But before we begin, just to give you a very brief introduction of who I am. Hi, guys. My name is Shantanu Jain. I lead the video content team at POPxo. So a lot of the sketches, the videos that you see at POPxo are personally written by our team, and I lead that team. And today, what we're going to do is I'm just going to give you a breakdown of how a scriptwriter usually writes a script and how you can basically start your own journey of writing scripts. This entire exercise has been divided into three small segments. In the first segment, we're obviously going to learn what basically is script writing. In the second part of it, we're going to talk about the process of script writing and what are the things that you need to keep in mind when you're starting to write your own scripts. And in the third part of it, I'm obviously going to give you a lot of pro tips from my own personal experiences, something that I wish somebody had given me when I started my journey as a scriptwriter. But that's all, why we're all here to share the learnings together. And yeah, so if you watch all the three segments together, and by the end of this live, I'm very sure, and this is my promise to everybody who's watching it right now, you'll be ready to start your own script writing journey. You'll be ready to draft your own first script. So without any further delay, let's start. So a lot of the times I've been asked this question that Shantanu, what is script writing and how does script writing differ from story writing or a poem writing for that matter? Well, the answer obviously is something जो आपको इंटरनेट की किसी वेबसाइट पे जाकर के नहीं मिलेगा, because हर जगह बहुत ही flowery words का इस्तेमाल किया गया है to basically explain the process of script writing. But I'm just going to give you a very simple breakdown of what script writing is. Script writing basically is writing for the visual medium. For example, to give you even a more basic example to that, if you are writing only to comprehend somebody's mind, that's not script writing. आपकी स्क्रिप्ट पढ़ के एक सक्सेसफुल स्क्रिप्ट की पहचान यही होती है that once you read the script, you can visualize, you can break down what each character, what each background, what each scene in the entire stream of the story or the backline is trying to convey to you. So that is what script writing usually is. And एक pro tip जो मैं इस point पे अपनी beginning में ही देना चाहूँगा, that if you have to become a good scriptwriter, you need to be a good scriptwriter from here. If you're able to visualize whatever it is that you're writing on a piece of paper, on your laptop, if you can visualize, if you can break down what each character, what each element, what each scene in your script is all about, then you become a good scriptwriter. So without any further delay, I think let's just start into this live program. Anybody who wants to take notes, please note, you do not need anything fancy for this workshop. You only need your notepad, pens. Anybody who's using the laptop or their mobile phone to take notes, please do take notes, because it's going to be very, very handy throughout the process. Okay, so इस वर्कशॉप को थोड़ा और बेसिकली एक्सप्लेन करने के लिए I'm just going to quickly tell you a story about something that I've written. Yeah, so, and this is something that we're going to be using as an example to explain the process of script writing in detail. So script writing के लिए मैं अपना एक example देना चाहूँगा, which is a story of Zoya. The script is called The Correct Decision. And Zoya की कहानी एक बहुत ही ordinary लड़की की कहानी नहीं है. Her कहानी is very, very different. Basically, she is a conservative girl from an upper middle class Muslim background. She always had this thing that मुझे अब तक लाइफ में कभी भी प्यार नहीं हुआ, मुझे अभी तक किसी के साथ अट्रैक्शन नहीं फील हुआ. But then suddenly her life changes overnight when she feels attracted to this elderly gentleman who seems to be her father's very close friend. So how does that relationship work out? Does Zoya marry the person that she is in love with? Does that relationship work out? Is basically what the entire script is about. So remember this example, because I'm going to be using this example as I explain the process of script writing in great detail to you. एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि script writing as a process is quite detailed. So एक average Bollywood script जो आप देखते हो, एक average Bollywood movie जो आप देखते हो, that is roughly somewhere between 110 pages.
That is how detailed each video script is supposed to be of a good feature film. अगर आप किसी कॉमेडी फिल्म की बात कर रहे हो, उसकी स्क्रिप्ट थोड़े कम पेजेस की होती है बिकॉज उसमें ड्रामा थोड़ा कम होता है. यू नीड टू डिस्क्राइब योर कैरेक्टर्स अ लिटिल लेस. बट if you are successful as a script writer, then please be sure that that is the amount of detail that go into each script writing piece, right? Also, just to give you a breakdown, because एक script में बहुत सारे अलग अलग pieces होते हैं, so I'm just gonna quickly tell you and you should note this down for your own good कि एक script writing के basic जब आप एक paper में उसको draw करते हो, when you start writing down a script, what are the different kind of headers and footers you need to add to make sure your script can be visually entertaining and appealing to anybody who's reading it. So there are usually 12 to 13 different elements that each scriptwriter integrates in their script in terms of just the formatting and not the content. But formatting ke hisab se, I'm just going to tell you 5 basics ones that can help you start your process of script writing. These are the most basics ones and everybody uses them. Okay. So the first one is the scene heading. Scene heading basically एक simple line का description होता है that basically sets the context for your scene. For example, मेरी story begin होती है जोया की कहानी from an evening जहाँ पे वो और उसका husband बेड पे रिलैक्स कर रहे होते हैं एंड एक बैकग्राउंड पे गाना चल रहा होता है, अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म. So in this scene, if I am writing the script for this particular scenario, मेरा scene heading होगा suburban house, late night, 11 p.m. And then the second part, the second slug of the header and footer process, the formatting of a script writing, is the action. For example, if I have to write the action for any particular script, it needs to be very detailed. For example, I would begin my script something like this. We open on a modern suburban home. The front window is illuminated by the lights inside. We see a silhouette of a lady figure and it turns back and forth. We push in closer and we slowly see the woman is listening to a music on her radio jukebox. So this is as descriptive as you need to get if you are writing down your script. So हम बात कर चुके हैं scene heading की, हम बात कर चुके हैं action की. Let's talk about the character. So each story, each script that you're writing needs to have these bold characters and each character needs to have a character sketch. That is also that you need to write when you're writing that script. The fourth part of the story formatting, the script formatting, is your dialogues. Please always remember that dialogues are the key of what your main characters are trying to communicate. Dialogues लिखने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा that write as little as possible and convey as maximum as possible. Always keep that in mind. And the last thing is short treatment. So a lot of the times जब हम as a script writer किसी भी script के ऊपर काम करते हैं and we want to add small notes, small interesting anecdotes for the person who's directing the script, the movie, to get an idea from what was the vision in a script writer's mind when they was writing the script, उसके लिए हम ये short treatment add करते हैं. So हमने basically बात कर ली है 5 script formatting elements की जो आपकी हर script में होने चाहिए. Obviously, I completely understand कि अगर आप अपनी script writing journey को start कर रहे हैं, so आपको इतने सारे elements को किस तरह से format करना है वो आपको नहीं पता होगा. But उसके लिए भी मेरे पास आपके लिए एक another pro tip है, which is that online बहुतेरों ऐसे softwares हैं, बहुतेरों ऐसी websites हैं जिसमें आप जा करके अपनी script writing journey को start कर सकते हैं. वहाँ पे ये जो headers and footers हैं, ये script formatting के options हैं, they are already pre-plugged in. So essentially ये सारे ऑप्शंस आपको वहां पे दिए होते हैं. यू जस्ट नीड टू एंटर इट एंड आपकी स्क्रिप्ट इन अ प्रॉपर स्क्रिप्ट राइटिंग फॉर्मेट आ जाएगी. इन सॉफ्टवेयर्स का नाम है सेल्टेक्स. देयर इज अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड ट्रेलबी, देन देयर इज पेज टू स्टेज. आई पर्सनली लव फाइनल ड्राफ्ट 10. आई पर्सनली यूज इट टू राइट ऑल माय स्क्रिप्ट्स. So moving on to the second segment of what are the different kind of things that you need to keep in mind when you're writing your own script. Okay, so a lot of people say कि उन्हें एक कॉमेडी स्क्रिप्ट लिखनी है, उन्हें एक एक्शन स्क्रिप्ट लिखनी है, उन्हें एक रोमांटिक स्क्रिप्ट लिखनी है. बट इन सारी स्क्रिप्ट्स को लिखने के लिए कुछ बेसिक पॉइंटर्स हैं दैट यू ऑलवेज नीड टू कीप इन माइंड एंड दीज आर दोज 5-6 पॉइंटर्स जो हर तरह की स्क्रिप्ट में कभी भी आप लिखने के लिए बैठ रहे हो, ऑलवेज कीप इन माइंड. अगर आप इन चीजों को अपने दिमाग पर रखेंगे, यू विल ऑलवेज एंड अप राइटिंग अ गुड स्क्रिप्ट दैट यू कैन प्रेजेंट to anybody that you want to pitch in for a movie, or even if you want to create your own blogs and videos in general in life.
So the first thing is log line. Now log line सुनने में काफी ज्यादा डिस्क्रिप्टिव लगता है, बट एक्चुअली इतना डिस्क्रिप्टिव है नहीं, एंड इट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ राइटिंग अ स्क्रिप्ट. सो बहुत सारे लोग स्टोरी टेलर्स होते हैं, बहुत सारे लोगों के पास कहानियां होती हैं, बट लॉग लाइन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे आपको एज अ स्क्रिप्ट राइटर क्लैरिटी मिलती है कि आप क्या लिखने वाले हो. लॉग लाइन एक बेसिकली 2 लाइन का समरी होता है ऑफ योर इंटायर स्क्रिप्ट. ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लॉग लाइन इज वेरी क्रूशियल सो दैट आपको अपने दिमाग में क्लैरिटी मिले कि एज अ स्क्रिप्ट आप लिखना क्या चाहते हो. कमिंग टू द सेकंड स्टेप इज डेवलप योर कैरेक्टर्स. मैं emphasize कर ही नहीं सकता कि कितना इंपॉर्टेंट है आपको अपने कैरेक्टर्स को डेवलप करना है. एंड व्हेन आई से डेवलप योर कैरेक्टर, you need to know their backstory, you need to understand their psyche, you need to keep them engaging and interesting for anybody who's viewing or reading your characters. For example, जैसे मैंने जोया की कहानी के बारे में आपको बताया, मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग करने के पहले आई नीड टू अंडरस्टैंड कि जोया का बैकग्राउंड क्या है, उसके फादर क्या करते हैं, उसकी मदर क्या करती है, वो किस बैकग्राउंड से आती है, उसकी चाइल्डहुड स्टोरी क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, व्हाट इज हर आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ. आई नो ये सारी फिक्टिशियस चीजें हैं, बट if you're writing a web series or a story or a movie script, you need to fetch out and detail out the characteristics of all your characters in this way. चाहे वो कितने भी छोटे बड़े क्यों ना हो, you need to give them as much importance as possible. Also you need to keep in mind that flat characters बिल्कुल मत लिखना. आजकल के टाइम पे flat characters absolutely do not do well. अगर आपकी स्क्रिप्ट को कोई चीज बर्बाद कर सकती है वो है एक फ्लैट कैरेक्टर जो कि सिर्फ एक तरीके का, her reaction, his or her reaction is same to almost all different kind of things. Next thing we come to is creating an outline. So आप जब स्क्रिप्ट लिखने बैठते हो, do not start writing the script one by one, scene by scene. Always start with the summary, which is called as the plot line. Now the plot line is again, it's a more detailed summary than a log line. Essentially ये 1 या 2 pages की होती है, but anybody who doesn't have the time to read your entire script can basically read the log line. Basically read the outline. So outline पढ़ने के बाद anybody gets an idea of what you're trying to convey through your script. Also, it helps you stay on track with whatever you have to communicate, whatever you have to write down in the script. Next thing, define the treatment. Please, it is very important कि जब आप script line अपनी script लिखने के लिए बैठे हो, understand कि आपको treatment क्या देना है. For example, People Live एक ऐसी movie थी, I'm so sorry. So as I was saying, People Live एक ऐसी मूवी थी जो कि काफी ज्यादा डिटेल्ड रूट इश्यूज के बारे में बात करती है. आई एम वेरी श्योर आपने मूवी देखी होगी. गांव में जिस तरीके के इश्यूज हो रहे हैं, गरीबी है, महंगाई है, उन सारी चीजों को काफी सटारिकल टेक के थ्रू इस मूवी ने हाईलाइट किया था. दैट इज व्हाट द ट्रीटमेंट ऑफ अ स्क्रिप्ट डज. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक आप अपनी स्क्रिप्ट के थ्रू कहना क्या चाह रहे हो और वो कैसे कहोगे. दैट बेसिकली फॉर्मुलेट्स टू व्हाट इज द ट्रीटमेंट गोइंग टू बी. आपकी स्क्रिप्ट की पेस क्या होने वाली है, उसको आप किस तरह से शूट करने वाले हो, ये सारी चीजों के पॉइंटर्स बेसिकली डिफाइन द ट्रीटमेंट ऑफ योर स्क्रिप्ट राइटिंग एक्सपीरियंस. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट यू इन योर स्क्रिप्ट. अ लॉट ऑफ पीपल जिनको कोई बेहतरीन वेब सीरीज या कोई बेहतरीन मूवी देख लेते हैं, उनको जोश चढ़ता है यार मुझे भी एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखनी है, एंड वो भूल जाते हैं दैट just like how each person is different from each other, each script needs to be different too. And for each script to be different, for your own script to stand out, you need to add your own personal experiences into the script. Script writing as a process काफी streamlined है, काफी detailed है. अगर आप उसको खुद में नहीं डाल पाओगे, उसके अंदर, उस स्क्रिप्ट के अंदर खुद को नहीं डाल पाओगे, it will not be engaging. And yeah, as a reader, as someone who's read a lot of scripts in my life, who's written a lot of scripts in my life, this is the first thing that I understand कि अगर किसी स्क्रिप्ट राइटर ने अपनी स्क्रिप्ट में खुद का कोई एलिमेंट नहीं ऐड किया है, it's just not interesting to me. So हम बात कर चुके हैं the basic structure of a script, हम बात कर चुके हैं what are the different kind of elements that you need to keep in mind when you're writing your first script. Coming back to the third and the most important segment, which is the pro tips. क्या प्रो टिप्स मैं दे सकता हूं आपको सो दैट आप तैयार हो जाएं बाय द एंड ऑफ दिस लाइफ टू राइट योर ओन स्क्रिप्ट. वेल, ये जो मैं प्रो टिप्स आपको देने वाला हूं आर कमिंग फ्रॉम माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस. एंड एज आई सेड बिफोर, आई विश जब मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू करी थी काश किसी ने मुझे ये टिप्स दिए होते. टू स्टार्ट ऑन, द फर्स्ट टिप दैट आई लाइक टू गिव यू इज गैदर एज मच इंटेल एज पॉसिबल अबाउट व्हाट यू आर राइटिंग.
A lot of people, they write डिटेक्टिव स्टोरीज, पुलिस मर्डर मिस्ट्रीज, उनको कुछ रोमांटिक मूवीज लिखने का शौक होता है और वो उस तरह की स्क्रिप्ट्स लिखते हैं. बट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप वो स्क्रिप्ट लिखने के लिए बैठे हैं, गैदर अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम पीपल. फॉर एग्जाम्पल, अगर कल को मैं एक स्टोरी लिख रहा हूँ, एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ जिसमें द मेन कैरेक्टर्स आर डॉक्टर्स, देन मुझे डॉक्टर से बात करना जरूरी है टू अंडरस्टैंड कि उनकी लाइफ के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, फॉर मी टू एड अ रिलेटेबिलिटी एलिमेंट टू माई स्क्रिप्ट. ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि आपने सोचा कि डॉक्टर्स क्या करते हैं एंड डॉक्टर्स की रियलिटी उससे कंप्लीटली डिफरेंट है. सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू ऑलवेज कीप इन माइंड. कभी भी आपके दिमाग में कोई भी स्क्रिप्ट राइटिंग का आइडिया है, जो भी आपकी की कैरेक्टरिस्टिक्स हो, जो भी आपके की कैरेक्टर्स हो मेन आर्च के, मेन स्टोरी के, प्लीज मेक श्योर कि आप उसके बारे में जितनी डिटेल रिसर्च कर सकते हो उतनी डिटेल रिसर्च करिए. नेक्स्ट थिंग, allow actions to tell your story more than your dialogues. काफी लोग जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, जो स्टार्टिंग में अपने करियर की शुरुआत कर रहे होते हैं एज अ स्क्रिप्ट राइटर, वो सब कुछ डायलॉग्स के थ्रू बताना चाहते हैं. उनके कैरेक्टर्स लिटरली एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि मैं तुमसे गुस्सा थी, तुम मुझसे गुस्सा थे, आज से हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे. That is a very story format of writing something, and that is not what good scripts are made of. You need to tell your story, you need to tell whatever is it that you are trying to convey through actions more than dialogues. In fact, a good script has very few dialogues and more actions. अगर किसी ने वीरे दी वेडिंग देखी होगी तो उसमें आपको समझ में आता होगा कि देयर इज दिस पर्टिकुलर trait in Kareena Kapoor's character कि जब भी उसे anxiousness होती है, whenever she feels she's up to something big, उसको scratching शुरू हो जाती है. And that is how a good scriptwriter uses an action like this to basically establish that my character is going to be nervous or anxious or irritated in a particular scene. So yes, actions के ऊपर बहुत focus करना जरूरी है. Third thing is hook. A lot of people write web series in a format की धीरे 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 वेब सीरीज की स्क्रिप्ट आगे बढ़ती जाती है एंड टुवर्ड्स द एंड देयर इज अ बिग रिवील. वेल, ये फॉर्मेट ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग काफी साल पहले काम करता था, बट लेटली आप जो भी स्क्रिप्ट्स देख रहे हो, जो भी मूवीज आप देख रहे होंगे, आप देखते होंगे कि एवरी वेब सीरीज एंड्स ऑन अ हुक. इनफैक्ट ईच एपिसोड ऑफ एन इंडिविजुअल वेब सीरीज ऑल्सो एंड्स ऑन अ हुक. सो व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ स्क्रिप्ट, अगर आपकी स्क्रिप्ट एक ऐसी है जो जिसका ग्रेट ग्रैंड रिवील टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कॉन्सेप्ट हो रहा है, दैट इज फाइन. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी स्टोरी को शुरुआत से एकदम फ्लैट रखोगे, because then it is just not engaging enough for an audience or a viewer to even watch a movie जो आपकी स्क्रिप्ट के द्वारा बनाई गई है. So always keep in mind कि hooks add करना बहुत जरूरी है so that the audience is always hooked on to their seats. Fourth thing, understand your audience. Understand कि आपकी audience को चाहिए क्या. अंडरस्टैंड कि अगर मैं एक क्लास स्क्रिप्ट लिखने वाली हूं जो कि एक हर किसी के लिए नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, तुम्बड़ एक मूवी आई थी जिसकी स्क्रिप्ट, एंड आई हैव बीन वन ऑफ द फॉर्चुनेट पीपल हु रेड द स्क्रिप्ट ऑफ दैट मूवी. ऑन पेपर जब आप उस स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये मूवी इज मेंट फॉर अ सर्टेन स्पेसिफिक काइंड ऑफ ऑडियंस. तो उसे जानबूझ करके आप उसमें व्यंग या ह्यूमर या कुछ अलग अलग तरीके की चीजें डाल करके उससे मासी नहीं बना सकते. You always have to be true to whatever it is that you're writing, and that as a scriptwriter is your primary job. So जब तक आप डिफाइन नहीं करेंगे कि आपकी ऑडियंस को क्या चाहिए, जब तक आप डिफाइन नहीं करेंगे कि आपकी ऑडियंस आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, आप ये स्क्रिप्ट लिख किस ऑडियंस के लिए रहे हो, that needs to be the first thing that you need to keep in mind when you begin to write that script. कि आपकी ऑडियंस क्या है इस स्क्रिप्ट के थ्रू आप किस तरह की ऑडियंस को रीच आउट करना चाहते हो. So yeah, that was my pro tips for you guys. So I think with all the intel that I've given you through this experience, through this app experience, through this POPxo live, I hope that you have enough knowledge to start your own script writing experience. Obviously, आपका हमारा communication यहाँ पे खत्म नहीं होता. In case you do end up writing, and I really encourage that, please start writing your first script if you've not started this already. Do write the first draft and छोड़ दो उसको थोड़ी देर के लिए. Read it after a week, revise it, and throughout the process, if ever you feel that you need my help, my inputs, absolutely do reach out to me. Do reach out to us through POPxo. We'll try to help you as much as possible. Also, you can reach out individually to me as well. On that note, I think it's time for us to end this
POPxo live experience. I hope that this was really fruitful experience for all of you. Anybody who came here to learn the basics of script writing, I hope I've been able to add some value to the entire experience of writing scripts. And all the best to all of you who are about to write their first scripts after this.